So today we are going to be starting with Cambridge IGCSE Chemistry Paper 2 Multiple Choice Extended May June 2025 and Paper 21. So it's going to be an interesting paper, so let's get started with the first question, which says that a gas is placed in a sealed container with a fixed volume. Asha, the container is sealed, it has a fixed volume. The gas is heated, now we're heating a gas that has a fixed volume. What's going to happen? The pressure is going to increase. Which statement is correct? The gas molecules move around faster. Yeah, when we're going to increase the temperature, definitely the pressure is going to increase. So the molecules, their vibrations, they're going to increase. So it's going to become faster. The gas particles collide with the walls of the container more frequently. Yeah, that's also going to happen because the pressure increases. The pressure in the container decreases. No, it's going to increase because whenever you are increasing temperature, your pressure also increases. So it's going to be option number 1 and 2. A sample of ethanol is heated at a constant rate. The heating curve of the sample is shown. This is the heating curve of the sample of ethanol. Which statement about the heating curve is correct? Okay. Ethanol changes its physical state between 3 and 4. Okay, so we are saying that between this 3 and 4, ethanol is changing its physical state. When you're changing your physical states, it's never a upward or downward sloping curve like this. When you're changing your physical state, you have a flat line like this. So we need a flat line, so that's incorrect. B says ethanol condenses between 2 and 3. Okay, between 2 and 3, you're saying you're condensing ethanol. This is a heating curve. So when you're heating a substance, when you're heating a sample of ethanol, what's happening is that you start from here and you start heating it. Okay, you start heating it, and as you heat, first it converts from a solid to a liquid from 2 to 3, then you further heat it, and then it converts from a liquid to gas. So there's no condensation occurring. I don't think there's any condensation occurring over. Okay, energy is absorbed between 3 and 4 but not absorbed between 4 and 5. Okay, energy is absorbed between 3 and 4. Over here they're saying energy is absorbed. Okay, so what's happening over here? First you need to realize that what kind of physical process is occurring. Melting is occurring between 3 and 4, and between 4 and 5 your boiling is occurring. So when you're melting a substance, are you absorbing heat or energy is absorbed when you're melting? So melting is going from solid to liquid. So when you're going from solid to liquid, you release energy or absorb energy? You absorb energy. So energy is absorbed between 3 and 4 but not absorbed between 4 and 5. 4 and 5 is from liquid to gas, and when you go to liquid to gas, you also absorb energy. You need energy. So this is incorrect. It's going to be option number D. More energy is absorbed between 4 and 5 than between 2 and 3 because more energy is absorbed. Look, the flat line is bigger. That's why more energy is going to be absorbed. And always remember that, because whenever always remember this thing, that whenever we're going from a liquid to a gas, we absorb more energy than going from a solid to a liquid. And the reason for that is simple, because when we're going from a liquid to gas, we need to break more intermolecular force, because in gas the particles are extremely far apart. Next question says which atoms have an equal number of protons, neutrons and electrons? Okay, definitely not argon. Hydrogen, no. Protons. Sodium, no. Nitrogen, simple. Nitrogen is 14. It has 7 protons. That means it has 7 neutrons and it has 7 electrons. This was simple enough. The only naturally occurring isotope of a sample of europium is this and this. The sample of europium has a relative atomic mass AR of 152. What is the percentage of europium 151 present in the sample? To 3 significant figures. Okay, what is the percentage of europium 151 present in the sample? To 3 significant figures. You have to figure out. Let's do it. Okay, so 151, we have the sample of europium, and we have 153. The relative atomic mass is 152, which is exactly in between this and this. This and this, the relative atomic mass exactly in between. That means we have 50% abundance of both. Always remember that when you have equal abundances of both your isotopes, when you have equal abundances, the mass is exactly in their middle. Moving on. Which statement about potassium chloride is correct? It has a high melting point because it has a giant structure. No, it has a giant structure but no covalent bonds.
It conducts electricity when solid. No, it only conducts in molten or liquid. It conducts electricity when molten because its ions can move. Yeah, that's correct, because when a substance is molten, an ionic substance, what happens is that ions become mobile. They're free to move. So it's going to conduct electricity in molten because of the free moving ion. So it's going to be option number C. It is insoluble. No, all potassium salts are soluble. Okay, which dot and cross diagram represents the nitrogen? Okay, firstly we gotta have 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 done for this nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 done for this nitrogen. B option. Which statement about silicon IV oxide is correct? Okay, firstly we know that it is going to be a giant covalent structure. It contains silicon ions. There are no ions in giant structure. So when you are forming your giant covalent structures, for example you have your structure of diamond or you have graphite, there are no ions in it. They are just strong covalent bonds. It is used in electrical circuits. No, its bonds each contain one shared pair of electrons. Its atoms are arranged in the same way as in atoms of graphite. No, this is incorrect. This is correct. Its bonds each contain one shared pair of electrons because it's basically SiO2. There is one silicon attached to 4 oxygens like this. You need to know the structures, and one oxygen attached to 2 silicons like this. So what happens is that all the bonds that you see in silicon dioxide, all the bonds, this bond, then this, and this bond, all are single bonds. So it's going to be that each bond contains a shared pair of electrons. Moving on, three organic molecules to describe the molecular formula of propanoic acid is this. Okay, the molecular formula of lactic acid is this. A glucose molecule consists of 6 carbon atoms, 6 oxygen atoms, and 12 hydrogen atoms only. Which molecule have the same empirical formula? Okay, so first let's find out the empirical formula for glucose, which is going to be CH2O. Why? Because it was initially C6H12O6. These two cut out. 6 1 times 6, 6 2 times, 6 1 times. So it becomes 1:2:1. Okay, so this is your this CH2O is your 1:2:1. So that's the empirical formula. Let's find out for propanoic acid. That's going to be, it is first, let's write the molecular formula, C3H6O2. So that's going to be this is the empirical formula because it cannot be further cut down. Let's find out for lactic acid now. C3H3,4,5,6 H6 and O2. So clearly we can see that this and this, propanoic acid and lactic acid, only have same because glucose has different empirical formula. Calcium carbonates react with dilute hydrochloric acid. So okay, we know that our calcium carbonate is basically reacting with our acid to form calcium chloride, water, and carbon dioxide. 1 gram of calcium carbonate is added to 50 cm cube of 0.5 mole per dm cube HCl. Which volume of carbon dioxide is made in this reaction? Okay, so now we are given with mass of this and this. We have to first find which reactant is in excess and which is the limiting reactant, and the moles of the limiting reactant would then determine the amount of the product form. So how many moles of calcium chloride we have? We have the mass. Let's find out the moles. Calcium carbonate moles is equals to mass times, which is 1 times the MR. MR is going to be 100, I guess. Let's do it. Calcium is 20. Calcium is not 20, it's 40. Calcium carbonate, CO3. 16 plus 16 plus 16, please, 100. Yeah, 100. My memory is so good. It was 100. For HCl, I need to multiply 50 upon 100, means my upon 1000, my concentration times my volume, 0.05. This is my 0.05 is my concentration and 50 is my volume. So 50 divided by 1000 multiplied by 0.05, 0.0025. So over here I have okay, over here I was trying to find my moles. Moles equals to mass upon MR. So sorry, it was 1 upon 100, so it was 0.01 moles, and for HCl I had 0.02.
0.025 moles. For HCl I had 0.000 तो नहीं था, 00 है. देखो, that's very important कि इसके बाद एक और 0 है. So 0.0025 moles. अब इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि वहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है. Obviously it's going to be HCl. So now we're going to find out कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स पड़ेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल्स हैं वो हाफ द मोल्स ऑफ HCl हैं, हाफ द मोल्स. सो 0.025 को डिवाइड कर देंगे 2 से. 0.00125 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं. मोल्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 से तो हमारे पास वॉल्यूम आता है जो कि 0.03 dm³. अब देखें 0.03 dm³ है, इसको cm³ में करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 1 2 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 cm³. नेक्स्ट सेज द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील ऑन एन ऑब्जेक्ट. अच्छा, जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही होती है ना तो रिमेंबर समथिंग, जिस चीज़ पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे स्टील का ऑब्जेक्ट हमने लिया, वो जो होता है हमारे कैथोड पे होता है, वो हमारा कैथोड पे होता है. जिस चीज़ को इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है वो हमारा एनोड पे होता है. और बाकी हम सॉल्ट उसका लेते हैं जिस सब्सटेंस, उस मेटल का जिस मेटल को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना हो. सो आई होप दैट मेक्स सेंस. नाउ लेट्स सी. A student makes 3 statements. The steel object turns a reddish brown color. The steel object should turn reddish brown color because copper is going to be deposited on it, so its color is going to change. The aqueous copper 2 sulfate changes to paler color blue. No, it won't change to pale blue color because what's going to happen, the amount of copper that basically is getting out of the solution onto the steel object, the same amount of copper is coming into the solution from this stick. So no, the copper electrode becomes thinner. Yeah, it would become thinner because it's losing mass. It's losing the copper. So it's going to be 1 and 3 only. Moving on to the next part, which says that a concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed using inert electrodes. So you have to figure out what kind of solution are you dealing with. Firstly, it's concentrated. Secondly, it's aqueous. And third thing is it's NaCl, electrolyzed using inert electrodes. So using inert electrodes to electrolyze it, which equation shows the ionic half equation for the reaction at the anode. Okay, so what's going to displace at the anode, you have to realize. For concentrated sodium chloride, you have Na plus signs, you have Cl negative ions, and since you have water, you have OH negative and H plus ions. So out of sodium and H plus, obviously you know what's going to discharge. That's a child's play, that this is going to discharge, hydrogen is going to discharge because hydrogen is less reactive. Out of the OH negative and chloride, because it's concentrated, because of this concentrated, your chloride ion is going to discharge. So at the anode, what's going to discharge? Chloride ion. And how do chloride discharge? They gain an electron? No, they lose an electron. So it's going to be 2Cl, which lost 2 electrons, making option B the correct. Which equation represents the overall reaction in a hydrogen-oxygen fuel cell? Simple. Hydrogen plus oxygen is going to form water. So you should have hydrogen, you should have oxygen and water, but this is not water. This thing that you formed is hydrogen peroxide, which is not water. So incorrect. This one right here, incorrect. You have to have hydrogen and oxygen and form water. Option A is correct. Moving on to the next question, which says that water is added to anhydrous copper 2 sulfate in a test tube. The mixture becomes hot. Which type of reaction and the reaction pathway diagram apply to this reaction? So firstly, because the mixture is becoming hot, so we are thinking that it is going to be an exothermic. And secondly, we know in exothermic, the products have less energy than the reactants. It's going to be option number C. That was a child's play. Okay, graph shows the results of adding excess calcium carbonate to hydrochloric acid at 50 degree. Okay, you should know that what kind of reactant are you taking in excess, and you're adding it in HCl at 50 degree and 30 degree. Obviously, the amount of product is going to be same, but for 30 the rate is going to be slower, and similarly for 50 the rate is going to be higher. Simple. The only temperature change. That's what we can see on the graph, that the amount of product is same for both. The product is same for both, but only thing is this is slower and this is faster. The next thing is which row describes the reacting particles at 30 degree compared to those at 50 degree.
frequency of collision between particles. Obviously at 30 degree frequency is going to be lower and average kinetic energy is also going to be lower because they're at 30 degree. At 50 degree it's going to be higher. Simple. Industrial ammonia is made in the Haber process. You should know it. The equation is shown. Okay, the conditions are this and this. That's what we know. Which statement about the conditions is correct? Temperature below 450 would give a lower rate. Yeah, obviously when you decrease temperature, your rate lowers. Temperature below 450 would give a lower yield. Okay, if you decrease the temperature, what will happen is that your yield is going to increase because this is an exothermic reaction. And in an exothermic reaction, whenever you decrease temperature, your yield increases. So that's incorrect. Pressure is above 200 atm will give a lower yield. So let's see, over here you have to check the moles on the right and on the left side. So on this side of the equation you have 4 moles, okay, 3 of this and 1 of this, and over here you have 2 moles. So pressure above 2 atm, okay, so if you increase the pressure, so what's going to happen is that your equilibrium is going to move backwards, so the yield is indeed going to decrease. So that's correct. Pressure above 200 atm are too expensive to maintain. Which statement about the conditions are correct? Yes, they are expensive to maintain, but we don't really consider them that way. Okay, they are expensive to maintain. That's correct. 4 should be correct. ठीक है, they're expensive, and 1 is also correct, so it's gonna be B. But let's see option number 3 as well. 3 was also correct, but there was no option for 1 and 3. That's why we had to choose 1 and 4. Okay, we could choose 3 and 4 as well, so we have to read the statement again. Pressures above 200 atm will give a lower yield of ammonia. Pressure above 200 atm will give a lower yield. Actually, what's going to happen is because there are 4 moles here and there are 2 moles here, so when you increase the pressure, what's going to happen, equilibrium is going to move forward. Sorry. I'm so sorry. Equilibrium is going to move forward. I'm sorry for this. I just miswrote. Equilibrium is going to move forward, and when equilibrium move forward, okay, when you increase the temperature, equilibrium move toward the side that is less moles. I'm so sorry for this. I just forgot it. Okay, let's write it down. When temperature increases, equilibrium move towards the side that has pressure. Sorry. When your pressure increases, equilibrium move towards side that has more moles or less moles. You're increasing the temperature, so less moles. That's done and dusted. 1 and 4 are correct. अच्छा, फिर भी हमारी options नहीं है. Good. Okay, ethanol is warmed with this thing. Okay, when you're warming ethanol with potassium manganate, what you're doing, you're oxidizing it. Which row describes the type of reaction that ethanol and the color change? Obviously, it's going to be from purple to colorless. Whenever this thing oxidizes anything, KMNO4, it changes from purple to colorless. 2 experiments involving acids R or S are done. Okay, 2 experiments are done. Let's see what are the results of the experiment. This mole of acid R completely dissolves in this cm cube of water. Okay, and these many moles of the acid R is dissociated in the solution. Let's see what are we doing with R. Okay, these are the moles of acid that completely dissolve in 500 cm cube, and 0.048 mole of acid is dissociated. Okay, out of 0.1, only 0.0048 mole dissociate. Let's see, 0.1 mole of acid S is completely dissolved, and out of that 0.0179 mole of acid S is dissociated. Out of 0.1 for S, this one was for R. What happens is that 0.0179 moles dissociate. Okay, so that is what is happening with R and S. Obviously, we understand from this that S is going to be a strong acid because there is more dissociation in S. Over here, the dissociation is less. You can see it for yourself. Over here, there are 2 zeros after decimal. Over here, there are 1 0 after decimal. This is a bigger number. So acid R is a strong acid, and acid S, no, it's opposite. Acid R is a weak, and acid S is a strong acid.
Now, I'd like to tell you guys one thing. I found a better option that acid R and S are both weak acid because both of them are not completely dissociating. So I guess option D is gonna be a better. Though acid S is stronger than acid R, but we won't consider S as a very strong acid because it's not completely dissociating. ठीक है, वो भी completely dissociate नहीं हो रहा, तो both ही weak हैं, but weakest जो है ना, weakest is R. वैसे both are weak, but the weakest is R out of both of them. Okay, lead sulfate is an insoluble. We know which process cannot be used to prepare a pure sample of lead sulfate. Obviously, crystallization cannot be used for uh, insoluble salts. That was easy. The formula of two hydrated crystals is shown. Okay, you know, but what's here? Over here you have a 5, and this is a 5 and this is a 6. I guess this needs no explanation. You should learn it that hydrated copper sulfate, that's pure learning. 5H2O, that is your water of crystallization. And for your cobalt chloride, that's 0.6H2O. That is what I learned for my O-levels IGCSE, and that is what you guys have to learn for your O-levels IGCSE. The properties of the elements change from left to right across the periodic table. Okay, that is what we know. Which statement describes how the properties change across period 3? So, okay, this is period 3. What is period 3 is going to be sodium and then magnesium and then aluminum. Okay, then we continue. Element change from gases to solids. Not at all. They change from basically solids to gases. अच्छा, elements change from non-conductors to not at all. They change from electrical to non-electrical. वही यहाँ पे metals है. Metals are very good conductors. और यहाँ पे non-metals है. Non-metals are bad conductors. अच्छा, element change from metal to non-metal. Yeah, that's correct. Metals and non-metal. Elements have decreasing number of what kind of, I don't know. Period में तो भाई electron number shell सब electron shell तो same रहता है. तो that's completely rubbish. Which property decreases down the group 7 of the periodic table from chlorine? Atomic number तो increase होता है भाई, density भी increase होती है, reactivity decrease होती है. अच्छा, some properties of the elements are listed. क्यों reactivity decrease होती है? Because atom bigger होते हैं. देखें, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है. अब now the bigger the atom gets, the more it's difficult to, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है. अब you are seeing one thing over here, that what's happening is that the distance of the nucleus and the valence shell increases. अब यहाँ पे distance increase हो रही है, ये देख लें. फ्लोरीन में सबसे कम डिस्टेंस है, तो फ्लोरीन जल्दी से, अब ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया फॉर इंस्टेंस, ऐसे ये ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू कम. अब फ्लोरीन का डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियस जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा. यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, न्यूक्लियस को मुश्किल होगी, और यहाँ पे और ज़्यादा डिस्टेंस है. ये देखें, इतना ज़्यादा डिस्टेंस, इधर सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है और इधर भी थोड़ा कम डिस्टेंस है इस एटम को अगर आप देखें तो. सो दैट इज़ वाई रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप. सम प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर लिस्टेड. ठीक है, दे गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एलिमेंट्स आर लिस्टेड. अच्छा, उनकी गुड इलेक्ट्रिक, उनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स है, वो मैलेबल हैं. देव आयंस दैट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. विच प्रॉपर्टीज आर करेक्ट फॉर बोथ आयरन एंड लिथियम. अब आयरन जो है हमें पता है कि दैट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, और लिथियम जो है वो ग्रुप 1 है. तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों की होगी. हाई मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ आयरन का होगा, मैलेबिलिटी दोनों में होगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी सिर्फ आयरन का होगा. सो 1 and 3 ऐसी चीज़ें जो बेसिकली दोनों में होंगी. ओके, 2 स्टेटमेंट अबाउट नोबल गैसेज आर लिस्टेड. नोबल गैसेज आर रिएक्टिव मोनोटॉमिक. ठीक है, नोबल गैसेज ऑल हैव फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज़ इनकरेक्ट. हीलियम एक ऐसी नोबल गैस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम के. तो फुल आउटर शेल तो है, बट यहाँ पे अगर 8 लिखा होता ना, 8 फुल आउटर शेल तो सही है, बट अगर 8 लिखा होता तो बस ये बात याद रख लेना कि हीलियम के 8 नहीं होते. नोबल गैसेज ऑल हैव फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या वो स्टेटमेंट्स है करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 आर रिएक्टिव. नोबल गैसेज आर रिएक्टिव. अनरिएक्टिव भाई, ये कैसे रिएक्टिव हो सकती है? इनके बारे में तो हम पढ़ते हैं. स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. कहाँ से रिएक्टिव आ गई? वो स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कॉपर इज़ करेक्ट. अच्छा, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग बिकॉज या यू यूज़ इट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग. इट इज़ मिक्सड विद टिन टू मेक एलॉयज. नहीं, वो टिन के साथ नहीं ऐसे मिक्स करते. कॉपर को ब्रास के साथ मिक्स करते हैं, उसके साथ जिंक के साथ करते हैं टू मेक ब्रास. अच्छा,
इट इज़ यूज्ड इन ओवरहेड, नहीं कॉपर तो यूज़ होता है, नहीं एलुमिनम यूज़ होता है क्योंकि उसकी लो डेंसिटी। इट इज़ यूज टू टेक अवे फूड, वो भी एलुमिनम यूज़ होता है। अच्छा, 3 स्टेटमेंट्स अबाउट सॉलिड जी आर लिस्टेड। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। पहले मुझे पता चल गया कि वो एक रिएक्टिव मेटल है, जिसमें मैं गोल्ड को काट दूंगी और सिल्वर को, क्योंकि वो ऐसे एक साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इट रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर, वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर। तो मैग्नीशियम होगा। पोटेशियम तो भाई इतना तेज़ रिएक्ट करता है कि फ्लेम्स आ जाते हैं। अच्छा, 4 मेटल J, K, L, M are added separately to aqueous solutions of their ions. The results are shown. अच्छा, that's J, K, L, M. अच्छा, ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज कि वो बता रहे हैं कि द रिजल्ट्स आर शोन विच मेटल विच स्टेटमेंट्स कब किसने किसको डिस्प्लेस कर दिया। अब सबसे पहले देखें, के ने जे को डिस्प्लेस कर दिया। के ने जे को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब के ऊपर है, जे नीचे है, ठीक है, इतना समझा। एल ने भी जे को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब एल कहीं जे से ऊपर ही है, एल कहीं जे से ऊपर ही है। लेकिन एल ने के को डिस्प्लेस किया, के को डिस्प्लेस नहीं किया, मतलब के से नीचे, के से नीचे। यहाँ तक हमने कर लिया। अच्छा, अब एम को देख लें। एम ने भी जे को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब एम भी ऊपर है। एम ने सबको डिस्प्लेस कर दिया, मतलब एम सबसे ऊपर है। और कुछ रह गया इसमें, जे सबसे नीचे होगा, किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। के जो है वो होना चाहिए सिर्फ जे और एल को करना चाहिए, एल को सिर्फ जे को करना चाहिए, और एम को तीनों को करना चाहिए। डन हो गया। जे हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आइंस देन के। जे के पास ज़्यादा नहीं, जे के पास कम है भाई। जे कम रिएक्टिव है। जितने ज़्यादा आप रिएक्टिव होते हो, द मोर रिएक्टिव यू आर, मोर टेंडेंसी यू हैव टू फॉर्म पॉजिटिव आइंस। ये कहीं लिख लो, मोर रिएक्टिव you are, more tendency you have to form positive ions. Moving on. Acha, L has a greater tendency to form positive ions than J. Yeah, that's gonna be correct. L is more reactive. Which process is used in the extraction of iron from hematite? क्या यूज़ करेंगे भाई? रिडक्शन यूज़ करते नहीं है हम, रिडक्शन बाय कार्बन करते हैं। आयरन लेते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड डालते हैं, आयरन की ओर लेते हैं, Fe2O3 रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है, कार्बन की ऑक्साइड बन जाती है, आयरन खाली निकल आता है। आयरन की जो ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है भाई, वो 3+ से 0 पे चला जाता है, उसकी रिडक्शन हो जाती है भाई। गैल्वेनाइजिंग प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग। कुछ स्टेटमेंट्स अबाउट गैल्वेनाइजिंग इज करेक्ट। गैल्वेनाइजिंग इन्वॉल्व्स कोटिंग आयरन विद सिल्वर। भी सिल्वर से करेंगे ना और मसला हो जाएगा, जिंक से करना पड़ेगा। सिल्वर लेस एक्टिव है भाई, होगा क्या कि सिल्वर की बजाय भी आयरन रस्ट हो जाएगा इसमें। तो आयरन अंदर का सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करेगा सिल्वर की भाई। सिल्वर ने क्या आयरन की करनी है, आयरन उसको बचाने में लग जाएगा, मसला हो जाएगा, ना करें, इस ऑप्शन को काट दें। Galvanizing prevents oxygen water from coming into contact with iron. Yeah, that's correct. Galvanizing works because the metal coating loses electrons more readily than iron. Yeah, because it's going to be more reactive now, so it's going to lose electrons more readily than iron. Nitrogen, phosphorus, potassium essential elements for the improved plant growth. Which mixture provides all 3 essential elements? Okay, सबसे पहले है ये वाला मिक्सचर। हमें नाइट्रोजन चाहिए था, पोटाशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नहीं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटाशियम है भाई, ये वाला। Which statements explain why increasing amount of carbon dioxide or methane in the atmosphere causes? तो कार्बन डाइऑक्साइड absorb thermal energy from यार, हाँ यही तो ये करती है भाई। जो सन होता है, मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग ना थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारी अर्थ है, दिस इज़ आवर अर्थ। I'm trying to make it nice. This is our earth, okay? And this is all, rest is water. अच्छा, अब ये हमारी अर्थ है। अब होता क्या है, I'm gonna make it colorful. ये लो, अर्थ यहाँ पे है सन, ये है सन, यहाँ से लाइट की रेज आती हैं। मैं प्रेप क्लास के लिए आपको ड्राइंग करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे लाइट रेज आती हैं। अब अर्थ के इर्द गिर्द होती है एक एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी हमें बनानी पड़ेगी।
अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम किस कलर से बनाएं? अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम बना देते हैं ब्लैक कलर से। ब्लैक से नहीं बनाते, मसला हो जाएगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर को रेड से बना दे। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये अर्थ के गिर्द एक एटमॉस्फेयर है। अब सन की लाइट आती है अर्थ की एटमॉस्फेयर में। ये आ गई सन की लाइट यहाँ से अर्थ की एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पे कुछ गैसेस होती हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी गैसेस होती हैं? दे आर स्पेसिफिक गैसेस, जिनका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये जब अर्थ इनको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और फिर जब इमिट बैक करता है, तो ये भी सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में से बाहर नहीं निकलने देती। उसकी रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम कॉज करती हैं ये गैसेस। रेडिएशंस को अर्थ से बाहर निकलने नहीं देती एट नाइट टाइम। तो ये करती क्या है कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं थर्मल एनर्जी को अर्थ से भी और सन से भी। मीथेन डज़ नॉट एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सन, डज़ नॉट एब्जॉर्ब। भाई इसमें तो कुछ ख़राब लग रहा है, देख लेते हैं। अभी तक सिर्फ ये और ये सही है, तो मतलब या तो 3 सही है या 4 सही है। मीथेन एब्जॉर्ब करता है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट रिफ्लेक्ट थर्मल एनर्जी फ्रॉम सन टू अर्थ। 4 पढ़ लेते हैं शायद आसानी हो। मीथेन रिफ्लेक्ट्स द थर्मल एनर्जी फ्रॉम अर्थ बैक टू अर्थ। या ये मीथेन करता है भाई, अर्थ से एब्जॉर्ब करते हैं थर्मल एनर्जी। अर्थ जो बाहर निकालती है ना अपनी थर्मल एनर्जी, मीथेन गैस है पॉइंट ग्रीन कलर से, अर्थ से एब्जॉर्ब करके अर्थ को ही वापस देगी, मतलब बाहर स्पेस में नहीं निकलने देगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो बी हो जाएगा। अच्छा, द एग्जॉस्ट गैसेस कार्स कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाउ दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम दे रिएक्ट टुगेदर एट हाई टेम्परेचर। भाई एग्जैक्टली यही मेरे दिल में था, यही इन्होंने पहले उसमें लिख दिया है। वुडंट इवन रीड और क्या लिखा हुआ है, छोड़ो। विच स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथाइल एथेनोएट। ये है। अब हमारे पास मीथाइल एथेनोएट का हमें फार्मूला दिया हुआ है और हमें पूछ रहे हैं कि विच कॉम्पाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मीथाइल एथेनोएट। ओके, लेट्स फाइंड आउट द इफ दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब आइसोमर्स होंगे। अब इसका मीथाइल एथेनोएट का क्या है? C3, कार्बन 3 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, H6 और O2 नज़र आ रहे हैं। इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। C3 है, H6 है, O2 है। इसका 1 2 3, C3 है, H6 है, O2 है। इसका है 1 2 3, C3 है, H 1 2 3 4 5 6 7 8, H8 है और O2 है। सो इट्स 1 and 2 ओनली, विच इज मेकिंग ऑप्शन बी द करेक्ट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन? अच्छा, मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन क्या होता है? ऐसे होता है और यहाँ पे सारे हाइड्रोजन्स होते हैं। दीज आर ऑल योर हाइड्रोजन्स in a molecule of propane. So how many covalent bonds can you see in a propane molecule? I believe there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 almost covalent bonds. Industrially, ethanol is produced by fermentation or by the reaction of ethene with steam, which was correct. Uses temperature of 100, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, fermentation के लिए कम चाहिए होता है। नीड्स प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, या इट नीड्स स्लो रिएक्शन, यस। हाई यील्ड तो बिल्कुल नहीं होती इसमें, तो लो यील्ड होती है। फास्ट रिएक्शन होता है, यस। डू नॉट नीड, यस। नहीं, इसको चाहिए होता है, इसको एसिड कैटलिस्ट चाहिए होता है, प्रोपेनॉइक फॉस्फोरिक एसिड चाहिए होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड जे आर लिस्टेड। ओके, इसकी प्रॉपर्टी, इट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। सॉल्युबल वाटर में अल्कोहल लग रहा है, कोई पक्का अल्कोहल लग रहा है मुझे, बिकॉज ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई अल्कोहल है, मैंने अभी से सर्कल कर दिया, लेकिन देख लेते हैं। अगला पार्ट कुछ हमें और भी बता सकता है, इसलिए इतनी जल्दी नहीं करते, और भी पढ़ते हैं, गलत होता है। मुझे लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकती है, क्योंकि अगला पार्ट कह रहा है इट हैज़ अ pH of 3. A pH of 3 means that it is going to be a carboxylic acid, not an alcohol, because alcohols have neutral pH. Okay, the next question says that the structures of two monomers that are used to make a condensation polymer is shown. Which structures represent one repeat unit of the condensation polymer formed? Okay, so we have to draw the one repeat unit. First of all, we're going to take the OH from here, OH from here, H from here. We're going to form water out of this. So what's going to become? It's going to be 1 2 and 3. There has to be a O here. This one seems correct. Yes, this one is correct. Okay, which item of apparatus is used to measure this
cm cube of aqueous sodium hydroxide. So it's going to be, since we have a fixed volume, so it's going to be option number D. That's going to be a pipette, because pipette measures exactly fixed volume. This is a beaker, this is a conical flask, this is a dropper. No, they don't measure exactly fixed volumes. Pipette measures exact volumes. Okay, which method is used to obtain copper 2 sulfate crystals from aqueous solution of copper sulfate? Obviously, it's gonna be, we have to obtain crystals from an aqueous solution of copper 2 sulfate. Chromatography नहीं, कंडेंसेशन नहीं, इवेपोरेशन नहीं, क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने, सिंपल फिल्टर कर लेंगे क्रिस्टल्स को भाई. A mixture of 4 different colored amino acids is analyzed by Weber chromatography. The final chromatogram is shown. Why does chromatography only show 3 spots? Locating agent is not used. नहीं भाई, locating agent से spots पे फ़र्क नहीं पड़ता, कलर पे फ़र्क पड़ता. One of the amino acids is insoluble. अच्छा, इसको हम देख लेते हैं, शायद ये हो. The solvent front is too near 9. 2 of the amino acids have the same RF value. One of the amino acid is insoluble, or 2 of the amino acids have the same RF value. So either it's going to be that one of the amino acid is insoluble in the solvent, or 2 of the amino acid have the same RF value. अब प्रॉब्लम ये हुई कि देखें, अब जब वन ऑफ द अमीनो एसिड अगर इनसॉल्युबल होता ना, तो वो यहाँ पे हमें नज़र आता. अब यहाँ पे हमें कोई अमीनो एसिड नज़र आ नहीं रहा, यहाँ पे तो प्लेन है. अगर वो इनसॉल्युबल होता तो इस लाइन पे तो नज़र आता ना, है ही नहीं इस लाइन पे, हमें वो दिखाया. इसलिए इसका मतलब है 2 अमीनो एसिड की सेम RF वैल्यू, क्योंकि हमें बेस लाइन फ्लैट नज़र आ रही है. जो इनसॉल्युबल होता है वो हमें एटलीस्ट, अगर इनसॉल्युबल है तो यहाँ पे तो नज़र आता ना, नहीं आ रहा. दैट्स वाई. आई होप यू गेट टुडेज़ पेपर. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. Bye bye, and do consider subscribing to my channel.